Good morning to all. Myself, Professor Nidhi Joshi. I am discussing about the subject Image Processing and Computer Vision. In that, I am discussing about the topic about the unit. The name of the unit is the Facet Model Recognition. So, in that, my agenda for today's session is to discuss what is a connected component labeling. So let us see the connected component labeling or the connected component analysis, that is the blob extraction, region labeling, blob discovery or region extraction is an algorithm application that we are going to use for the graph theory, where the subset of the connected component are uniquely labeled based on the given data. The connected component labeling is not confused, like connected component जो उसके nearby area रहेगा, region रहेगा, basically that we are going to talk in the connected component. और segmentation में क्या करते हैं, we are going to partition the object or the regions into the smaller part, segments में divide करते हैं. The connected component labeling is used in computer vision to detect the connected region in the binary digital image, although the color image and the data with the higher dimensionality can also be processed. क्या करते हैं connected component labeling हम in the computer vision, जो भी nearby जो connected regions रहते हैं that are going to process when integrated into the human recognition system or the human computer interaction interface. The connected component labeling can operate on a variety of the information. Blob extraction is generally performed on the resulting binary image from a thresholding step, but it can be applicable to the grayscale and the color image as well as. The blobs can be counted, filtered or tracked. Blob extraction is related to the distinct form of the blob detection. Basically जो connected component labeling है, जो भी nearby connected regions रहते हैं binary image में, the color image or the data with the higher dimensionality, that we are taking into consideration, and that all things that are going to process. So connected component labeling, that collected component labeling scans an image and groups its pixel into the component based on the pixel connectivities. कैसे हम लोग नियर बाय कंपोनेंट को, नियर बाय एरिया को हम लोग कंसिडर करते हैं या ग्रुप को कंसिडर करते हैं. द कनेक्टेड कंपोनेंट लेबलिंग, सो व्हाट इट विल बी डूइंग, इट स्कैन्स एन इमेज एंड ग्रुप्स इट्स पिक्सल इनटू द कंपोनेंट बेस्ड ऑन द पिक्सल कनेक्टिविटी. जो पिक्सल सिमिलर टाइप के हैं दैट वी आर गोइंग टू take into consideration, and all the pixel in a connected component share the similar pixel intensity value. जो भी हम लोग pixels consider कर रहे हैं, they are having the same pixel intensity values. उनको हम लोग ग्रुप करते हैं that are having the same type of the pixel intensity value are in some way connected with each other, किसी ना किसी तरीके से connected है. Once all the groups has been determined, each pixel is labeled with the gray value or color the color labeling according to the component it was assigned to. small like different colors हम लोग assign कर देते हैं so that we can easily identify the different groups. उनको लेबल कर देते हैं. एक्सट्रैक्टिंग एंड द लेबलिंग ऑफ द वेरियस डिसजॉइंट एंड द कनेक्टेड कंपोनेंट इन इमेज इज सेंट्रल टू मैनी ऑटोमेटेड इमेज एप्लीकेशन. So basically we'll see how it going to work. The connected component labeling works by scanning an image pixel by pixel. Like we are going to check the image pixel by pixel. Either we can go from top to bottom, left to right, so that we can easily identify, we can go through all the pixels which are there in the image. So in order to identify the connected pixel region, that is the picture regions of the adjacent pixel will share the same set of the intensity value, that is the V. So if we are having the binary image that is V is equals to 1, binary image 0 और 1 के फॉर्म में रहती है, तो intensity value क्या हुई,
1. So however, in the gray level image we will take on the range value, like we have considered one example. The range value that we have considered is 51, 52, 53 to 80. So the connected components labeling works on the binary or the gray level image, and the different measure of the connectivity are possible. However, for example, we assume the binary input image and 8 connectivity. The connected component labeling operators scans the image by moving along a row until it comes to the point P. जो P है वो represent कर रहा है पिक्सल. सो हम लोग 8 कनेक्टिविटी वी हैव कंसिडर्ड. तो 8 कनेक्टिविटी कंसिडर हमने कैसे करी है? पिक्सल के कोरस्पॉन्डिंग, दैट इज अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, एंड दैट इज द डायगोनल ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम एंड left bottom and the right bottom. So when this is true, it examines the 4 neighbor of P which have already been encountered in the scan. कैसे हम लोगों ने the left of P, above it, the 2 upper diagonals, like the 8 connectivity, the 8 pixels which are near to that. So we are using the input image and the 8 connectivity that we are going to follow. So based on this information, the labeling of P occurs as follow. If all the 4 regions are 0, then assigns the new labels to P. Otherwise, if only one neighbor has the value V, will assigns 2 labels to P. If more than one of the neighbor has the value V is equals to 1, assign one of the labels to P and make a note of the equivalence. So यहाँ पे हम लोगों का क्या रहता है? आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कैन, द इक्विवेलेंट लेबल पेयर आर सॉर्टेड इनटू द इक्विवेलेंस क्लास एंड अ यूनिक लेबल इज असाइंड टू ईच क्लास. लाइक हम लोग जो भी 8 पॉइंट कनेक्टिविटी हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू लेबल हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंसर्न ये रहता है कि जो भी आसपास नियर बाय पिक्सल्स हो पिक्सल, सिमिलर टाइप ऑफ द पिक्सल्स, उनको हम लोग अप्रोच कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके, एंड वी कैन असाइन द कलर टू दैट पिक्सल. दैट इज द मेन कंसर्न. सो लेबलिंग ऑफ P occurs कैसे हो रही? इफ ऑल द 4 neighbors अप, डाउन, लेफ्ट, राइट आर 0, then we are assigning the labels to P. If only one neighbor has the value, then we'll assign to P. If more than one of the value V is equals to 1, then assign one of the labels to P and make a note of the equivalence. हम लोग कैसे labeling करते हैं? Based on this information, based on this by looking at the neighboring pixel. So after completing the scan, the equivalent label pair are sorted into the equivalence class and a unique label is assigned to each class. As a final step, a second scan is made through the image, during which each label is replaced by the label assigned to its equivalent class. For display, the label might be different gray level or the colors. So to understand this, actually like how it's going to work, let us consider one example. Like we have considered a connected component labeling. So we have started with a simple binary image. So this is the binary image and that contains some distinct artificial object. So the artificial object that is represented by this is the artificial object. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total 8 different object we have considered. Like this is one example that we had considered here. So after scanning the image, scan हम लोग कैसे करेंगे? image from left to top to bottom and left to right. After scanning this image and labeling the distinct pixel, अलग अलग जो pixels है उनको लेबल करते हैं. लेबलिंग द डिस्टिंक्ट पिक्सल क्लास विद अ डिफरेंट ग्रे वैल्यू, वी ऑब्टेन द लेबल आउटपुट इमेज. द लेबल आउटपुट इमेज दैट वी आर गेटिंग फॉर दिस एग्जाम्पल, हम लोगों ने यहाँ पे जितने डिस्टिंक्ट पिक्सल्स है उनको हम लोगों ने लेबल किया है, स्कैन किया है, एंड लेबलिंग द डिस्टिंक्ट पिक्सल क्लास, जिनको डिफरेंट ग्रे वैल्यूज हम लोगों ने असाइन करी है 0 और 1 के फॉर्म में, और दिस कोरस्पॉन्डिंग लेबल आउटपुट दैट वी गॉट एज अ रिजल्टेंट. सो नाउ
Note that this image was scaled since the initial gray values, that is 1 to 8, would all appear black on the screen. So however the pixel initially assigned the lower class and are still indescribable. हम लोगों ने ये जो भी पिक्सल्स है लाइक 0 और 1 फॉर्म में हम लोग लाइक वी कैन नॉट ईजिली रिकॉग्नाइज, तो हमने ये जितने पिक्सल्स है उन लोगों को वी हैव असाइन द डिस्टिंक्ट कलर्स टू ईच ग्रे वैल्यू. किसी को हम लोगों ने रेड असाइन किया, ब्लू असाइन किया है, ग्रीन असाइन किया, पर्पल असाइन किया, वाइट असाइन किया है, सो दैट वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द पिक्सल्स. रीजन्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते. The full utility of the connected component labeling can be realized in the image analysis scenario, whereas the images are the pre-processed why some segmentation, that is the thresholding or the classification scheme. So one use of the connected labeling is to count the object in an image. एक क्या एग्जाम्पल है लाइक कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट को. वी कैन सी एंड वी कैन ईजिली काउंट लाइक द डिफरेंट व्हाट आर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर देयर इन द इमेज. यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 में यूजिंग यूनिकली डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकती हूँ if I am having the distinct color in the image. So the connected component labeling to count the objects in an image. For example, in the above scene, the 8 objects yield the 8 different class. So if you want to count the object in the real world scene like this, like ये हम लोगों ने image consider करी है, like it's a vibe, like so many objects are there. So what we have to do? So first we have to threshold the image in order to produce the binary input image. The implementation being used only takes the binary image. यहाँ पे बहुत small object से या बोल सकते हो particle से. So like what we are doing, setting all the values above the value of 150 to 0 yield. First of all what we are going to do, इसको हम लोगों ने इस particularly इस image को binary input image को we have जो image है उसको हम लोगों ने binary input image में यूज़ किया है. बाइनरी इनपुट इमेज हम लोगों ने इसकी प्रोड्यूस करी है एंड आफ्टर दैट वी हैव सेट द वैल्यू इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ 150 to 0 सो दैट हमें एक इस टाइप की एक रिजल्टेंट इमेज मिली है. जो वाइट डॉट थे दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ब्लैक डेड सेल इन द ओरिजिनल इमेज. द कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ दिस बाइनरी इमेज, जो कनेक्टेड कंपोनेंट है वो इट विल बी गोइंग टू लुक लाइक दिस. इस वाइट इमेज को जहाँ पे वाइट था उसको हम लोगों ने ब्लैक में कन्वर्ट किया और जो ब्लैक है उसको वाइट में कन्वर्ट किया है ताकि यहाँ पे जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके डिस्टिंक्टली. द वाइट डॉट corresponds to the black dead cell in the original image. The connected component of this binary image can be seen in. The corresponding color map shows that the highest value is 163. The output contain 163 कनेक्टेड कंपोनेंट, सो दैट हम लोग कितने कनेक्टेड कंपोनेंट है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सके. सो इन ऑर्डर टू बेटर सी द रिजल्ट वी नाउ वुड लाइक टू असाइन द कलर टू ईच कंपोनेंट. अब हमारा सेकेंड कंसर्न क्या है कि लाइक वी गॉट दिस इमेज, हम लोगों का ऑब्जेक्टिव स्टिल द ऑब्जेक्टिव इज लाइक वी हैव टू फाइंड लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर देयर इन द इमेज. तो हम लोग इन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट ये जो पिक्सल वैल्यू इनको हम लोग डिफरेंट कलर असाइन करेंगे. द प्रॉब्लम इज हियर इज दैट we cannot find the 163 color where each of them is different enough from all the other to be distinguished by the human eye. So एक again हमारे पास क्या है, एक चैलेंज है, बिग चैलेंज फॉर अस कि लाइक 163 ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पे. तो वी आर नॉट हैविंग दैट मच 163 कलर की जिसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट्स को हम लोग असाइन कर सकें. एंड इफ द नंबर इज मोर दैन दैट सो कि the color where each of them is different enough from all the other to be distinguished by the human eye. Sorry for that. So in order to overcome this, like two possible ways हमारे पास है to assign colors are as follow. We use only a few colors. एक तरीका ये हो सकता है कि we are going to use only a few colors which are clearly different from each other and assign each gray value of the connected component image to one of this color. The result can be like this. कुछ हम लोगों ने randomly like we have chosen some few colors like 7-8 color we have chosen and we have assigned this to the connected component.
So we can now easily distinguish two different components provided that they were not assigned the same color. बस यहाँ पे एक condition हम लोग रख रहे हैं, we have taken that condition into consideration, like not the two components will have the same color. So we lose a lot of information about this, we lost a lot of information because in this case 160 are reduced to 8 different color. So एक अप्रोच हमारे पास ये है कि हम लोग डिफरेंट कलर असाइन कर सकते हैं. सेकेंड वन इज वी कैन असाइन द डिफरेंट कलर टू ईच ग्रे वैल्यूज, मेनी ऑफ देम बीइंग क्वाइट सिमिलर. टिपिकल रिजल्ट ऑफ दिस, यहाँ पे हम लोगों ने लाइक वी हैव टेकन केयर द डिफरेंट कलर्स एंड लाइक वी कैन टेक लाइक फ्रॉम द टॉप में जो लाइक कुछ एरिया हम लोगों ने स्पेसिफाई किया. एरिया वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन, पर्टिकुलरली इस एरिया तक या इस वैल्यू तक we are assigning one color to the object, particularly from this plane we are assigning this values. So we can assign a different colors to each gray values, जिसके कारण भी हम लोग like objects को हम लोग recognize कर सकते हैं. So we sometimes cannot tell the boundary between the two component when they are very close to each other. हम लोग boundary भी नहीं इस वाली अप्रोच में, सेकेंड वाली जो अप्रोच है उसमें हम लोग लाइक बाउंड्री जो है लाइक जो दो कंपोनेंट्स है उनके बीच में कोई बाउंड्री है तो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई. So we do not lose any information. We sometimes cannot tell the boundary between the two components when they are very close to each other. We do not lose any information. So more sophisticated techniques combine both the method, like both the techniques are having their different flaws. So more sophisticated technique हमारी ये रहती है कि like we can combine both this method. They make sure that the two nearby component always have the distinct color by taking into account the color of the neighbor of the component which is going to be assigned a color. So if we compare the above color labeled image with the original, we can see the number of the component is quite close to the number of the dead cell in the image. So however we obtain the small difference since some cells merge together into one component or dead cells are suppressed by the threshold. हमारी अप्रोच क्या रहेगी कि लाइक वी आर लाइक डिस्टिंक्ट कलर हम लोग यूज कर रहे हैं एंड मेक श्योर लाइक द नो टू नेबर्स will have the same color. So we have taken care one more problem into consideration. So we encountered the greater problem when trying to count the number of the turkeys in as the color labeled version. यहाँ पे like कुछ turkeys है 1 2 3 4, एक कुछ ये फार्म की पिक्चर है. So सबसे फर्स्ट वन इज वी आर लेबलिंग द थ्रेशोल्ड इमेज. इस कि हम लोगों ने ग्रे वैल्यू को रीडिफाइन किया एंड आफ्टर रीडिफाइनिंग इट्स गोइंग टू यील्ड दिस labeling the threshold image. This is the original image. We have labeled the threshold image. After that it's yielding this result. And next one is as a gray level. So हम लोगों ने different ये जो objects है different ये जो objects है pixels है इनकी value हम लोगों ने change करी. And after that we got this the resultant image. We encountered the given number of the turkeys in a color labeled version. Although we managed to assign one connected component to each turkey, the number of the component do not correspond to the number of the turkey. And the common variant that we are going to use a collection of the morphological operations for extracting the connected component and labeling them in the various way. A simple method like different we are going to use erosion, dilation. हमारा ये पर्पस रहता है कि extract कर सके connected components and labeling them in the different way, like whichever it's convenient for the application. Simple approach that method that we are going to use is extracting the connected component of an image combines the dilation and the mathematical intersection operation. The former identify the pixels which are the part of the continuous region sharing a common set of the intensity value, and the latter eliminate the dilation centered on the pixel with the v is equals to 0. The structuring element define the desired connectivity.
So we have considered this example that is showing a triangular block applying a geodesic operate to the image that produce the label image. So whereas in the gray level intensity labeling across the surface of the block encodes the geodesic distance, the light pixel represent the larger distance. Like for different approach में भी हम लोग यूज कर सकते हैं. So that's all is there in the today's session. In case if you are having any question, just let me know. Thank you.